The next is volumetric what? Analysis. First, you write some questions. All right. 2 grams of a metal. 2 grams of a metal on reaction with acid, liberate 2 grams of metal on reaction with acid, liberate hydrogen gas. It requires to complete neutralize. 100 ml of 0.1 n. N means normality. 0.1 n acid. 1 n acid. Calculate the equivalent mass of the metal. Equivalent mass of the what? Metal. Mass of the metal. Okay, next question. You may write. Lekho 2 grams of a dibasic acid. 2 grams of a dibasic acid required to complete neutralize. 100 ml of 0.1 n NaOH. 0.1 n NaOH. Calculate the molecular mass of acid. Molecular mass of acid. Molecular mass of what? Acid. 10 grams of Na2CO3 x water, sodium carbonate x water. Sodium carbonate what? X water. Each prepared 250 ml solution. 250 ml solution. 250 250. 250 ml what? Solution. 25 ml of this solution. 25 ml of this solution. 25 ml of this solution required to complete neutralize. Required to complete neutralize. 10 ml of n/2 HCl. N normality. N/2 what? HCl. Normality. N by 10 ml. 10 ml of n/2 HCl. Calculate the value of x. Calculate the value of x. Okay, calculate what? The value of x. Next question.
Lot 10 grams of a sample of calcium carbonate CaSO3. 10 grams of calcium carbonate 10 grams of calcium carbonate sample of calcium carbonate required to complete neutralize neutralize 100 ml of n by 10 100 ml of n by 10 100 ml of n by 10 H2SO4 sulfuric acid. Calculate the percentage purity of CaSO3 in the sample. Percentage purity of CaSO3 in the what sample? CaSO3 in the what sample? Next question. How many grams of zinc? How many grams of zinc is required to complete neutralize? Is required to complete neutralize? Is required to complete neutralize? 100 ml of 0.1 N. 100 ml of 0.1 N H2SO4. 0.1 N कौन H2SO4. आउट क्वेश्चन देखो. What volumes of 0.1 N NaOH? What volumes of 0.1 N NaOH? What volumes of 0.1 N NaOH required to complete neutralize? Required to complete neutralize 100 ml of HNO3 nitric acid 80% by volume the density of HNO3 is 0.63. The density of HNO3 is what? 0.63. 0.63. Okay? Actually, you do it. Don't call up, try. You try. You just try. Try करो. कम करो मत बताइए नाले. You try. First try करो. Listen. I have already told you. First to see what is given and what you have to solve. First see what is given and what you have to solve. Okay, one is given, other is you have to calculate. Whatever expression given, I have already told you, either you have to convert to equivalent term or convert to mole. Two term. Either convert to what? Equivalent or convert to moles. Okay? If you will convert to equivalent term,
that will equal. If acid combined with the base, the equivalent mass of acid must equal to equivalent mass of what? Base. Means the gram equivalent of acid must equal to gram equivalent of base. Or milli equivalent of acid must equal to what? Milli equivalent of base. What if we convert to moles? If we convert what? Moles. Then you have to convert to equivalent. How to convert? By multiplying with the n factor. By multiplying with what? N factor. You know what is the n factor for metal? Valency, acidity, basicity, base, acidity, salt, total positive charge or negative charge. So whatever expression given, either convert to equivalent term or convert to mole term. If you convert to equivalent term, that become directly equal. If you convert to equivalent term, that is directly equal. But if you convert to moles, mole will equal. If you multiply with what? If you multiply with what? N factor. Multiply with what? N factor. Okay. So whatever expression given, either convert to mole or convert to equivalent. Then you have to equate. You get the answer. Final. Okay. Look at here. Only two expression. Okay. You mind use this and you can solve easily. So what is first question? Metal with what? Acid. HCl. Metal, what is given? 2 grams. HCl, what is given? Volume 100 ml. Normality 0.1 N. I have already told you, if normality or molarity is given, volume must give. Either to convert to moles or convert to gram equivalent. Do you understand or not? Achha, 2 grams. What you have to calculate? Equivalent mass. It's equivalent mass. So it is easy to convert what? Gram equivalent. It is easy to convert what? Gram equivalent. What is gram equivalent? Weight by equivalent mass. Weight by what? Equivalent mass. This becomes what? 2 by what? 2 by E. This is, what is this? Gram equivalent. This is gram equivalent. This must equal to normality into volume ml milli. Volume liter what? Gram equivalent. ml multiply milli equivalent. Liter multiply what? Gram equivalent. So normality equal to 0.1 into volume in liter. How much? 0.1. 0.1. 0.1. Okay. So this is gram equivalent. This also what? Gram equivalent. This is gram equivalent. This also what? Gram equivalent. You can calculate E. Very easy. Are yes or no? Next question. Everything you can calculate by this process. Everything. I already told you. No other concept. Second question. A dibasic acid means what? Its N factor equal to 2. Basicity equal to. N factor equal to what? 2. Okay. React with what? Base. Anyway, acid must react with the base. How much? 100 ml. Normality. How much? 0.1 N. So this mass given or not given? 2 grams. Calculate molecular mass. So 2 gram you have to calculate what? Molecular mass. You can convert to mass given. Molecular mass you have to calculate. So what you can convert?
You can convert what? Moles. 2 by molecular mass. This is what? Gram equivalent or gram moles? Gram moles. Gram moles. You convert to gram equivalent into n factor 2. Into n factor 2. Yes or no? This is gram equivalent. This also you can convert to gram equivalent, normality into volume liter. Volume liter. This also equal to gram equivalent. Clear? Ki not clear? Okay, very simple. Okay, next. Next. Fatapat. 10 gram of Na2CO3 X water. Na2CO3, how much? X water. 10 grams. Must react to the acidity. 10 by 2, 10 ml. Acha. No. This amount of salt is prepared 250 ml solution. 250 ml solution. This is the question. 25 ml of Listen first. This is another concept. Out of this volume, you have taken only 25 ml. You have taken only 25 ml. 25 ml of this solution is required to complete neutralize what? 10 ml of what? N by 2 HCl. This is the question. How can solve? How can solve? How can solve? Look at here. The total amount of salt within 250 ml. Total amount of salt within what? 250 ml. You have taken only 25. Out of 250, you have to take what? Only 25. 25 volume require how much? 10 ml. 25 ml require what? 10 ml. If we take total volume, for 25 volume require what? 10. For 25 volume require kete? 10. If we take entire volume, this volume must be what? 100. This volume must be what? 100. So this is not 10, this is equal to what? 100. Then you can remove. Total amount within what? 250 ml. This amount of salt prepare how much volume? 250 ml. Out of 250, you have taken how much? Only 25. Only 25. 25 ml of this solution require what? 10 ml. Question is given. Require what? 10 ml. With 25 require 10 ml, 250 require how much volume? 25 to 10. 250 ki? Are 25 ml to require how much ml? 10 ml. If you take 250 ml, volume require how much? 100 ml. 100 ml. So this volume must be how much? This volume must be 100 ml. So directly no koi ki indirectly koi. Are yes. बुझियो को. Clear ki not clear? You always do this. Enter volume in this. Out of this volume, you have taken only what? 25. 25 to 10. 250 how much? 250 how much? 250 require how much? 100 ml. Then now you can do. Achha, you first convert to moles 10 by what? 10 by molecular mass 106 plus x into 18. X into 18. This is what? Moles. Gram moles. This is what? Gram moles. This also convert to gram equivalent. Normality half into volume liter. Volume liter. Okay, this is
gram equivalent. But this is moles. You have to convert to gram equivalent. How to convert to gram equivalent? N to N factor. N factor of what? Salt. What is the N factor? What is the N factor? 2 into 2 into 2. Clear? Not clear? Okay. Next. Next question. 10 gram sample of calcium carbonate equal to Calcium carbonate 10 grams sample. Required to complete neutralize. Required to complete neutralize. How much? H2SO4. 100 ml 100 ml of 100 ml of how much? n by 10 N by 10. H2SO4. How again I go? It's a calculate what? percentage pure Percentage purity means X percentage pure. X percentage pure. How again I go? ତମେ କରିବ ହବ କି ନାଇଁ କହ ହବ କି ନାଇଁ କହ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖୁ ତୁ କରିବା କଥା କଣ ହବ କି ନାଇଁ କହ କେମିତି ହବ କହ you can convert to moles how can you convert to moles 10 into very good x by 100 pure mass y molecular mass this is pure moles this is what pure moles or yes or no this convert to what gram equivalent into n factor 2 this also convert to n factor half into 0.1 half into 1 by 1 are it clear ki not clear any doubt simply concept okay next last question perhaps you can do হব না বতেবি হ্যাঁ ডাকে ফটাফট how many grams of zinc required to how many grams of zinc to neutralize H2SO4 H2SO4 100 100 ml ml normality la 0.1 0.1 n ତମେ କରିବ ମୁଁ କରିବିନି ହବ କି ନାଇଁ କହ ମୁଁ କହିବିନି ଜିଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ 2 ହବ କି ନାଇଁ କହ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ବତେଇବି ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ volume of 0.1 normal NaOH required to complete देखो, neutralization of HNO नाइट्रिक एसिड how much 100 110 ml 100 100 ml 80% 80% by volume density density 0.63 अच्छा आउ NaOH volume you have to calculate normally how much 0.1 হব কি নাই কহ হব কি নাই কহ আচ্ছা this data given whether this can convert to moles or not whether this can convert moles or not how much moles 100 density percentage by 100 okay why what molecular mass 63 this is what moles convert to gram equivalent into 1 is equal to 0.1 into volume liter volume what in liter these are the simple titration okay clear cannot clear then case 2 mixture analysis right mixture analysis four category actually there are 4 types of problems numericals here mixture what analysis you first write one question 10 grams of a sample 10 grams of a sample first write question 10 grams of a sample
contains NaCl and NaOH. NaCl and NaOH. NaCl and NaOH. Each prepared 250 ml solution. 250 ml solution. 250 ml of what? Solution. 25 ml of this solution. 25 ml of this solution. 25 ml of this solution required to complete neutralize. 25 ml of this solution required to complete what? Neutralize. 10 ml of 0.1 N HCl. 10 ml of 0.1 N what? HCl. Calculate the percentage purity of NaCl in the mixture. NaCl in the what? Mixture. NaCl what in the what? Mixture. Second question you can write. Second question. Look at here. Now 10 grams of mixture of NaOH and Na2CO3, sodium hydroxide, sodium carbonate. Sodium hydroxide and sodium carbonate. Required to complete neutralize. Required to complete what? Neutralize. Required to complete what? Neutralize. 100 ml of 0.1 N HCl. 100 ml of 0.1 N what? HCl. Calculate the percentage composition mixture. Percentage composition of a mixture. Percentage what? Composition of a mixture. ओके देखो प्लेट है बहुत ही दोस्तों look at here let mixture contains A and B AB mixture this mixture react with what? C mixture react with C to produce D or E AB mixture react to the C to produce what? D or E. Produce D. Okay? अच्छा C रो डाटा देज कि D रो डाटा देज C डाटा देज C डाटा देज first you have to mark whether C react to the A or react to the B or react to the both. C react to the A or with the B or with the both. कौन फर्स्ट मार्क करियो कोन जे C टा रिएक्शन कहा सहित करूची A सहित ना B सहित ना बोथ सहित रिएक्शन कहा सहित होची मन कर ये होची एसिड दिस इज एसिड मन कर C इज एसिड का रिएक्शन करे बेस एसिड रिएक्शन का सहित करे बेस कॉमन बेस के कॉमन बेस होची मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल कार्बोनेट कॉमन बेस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट कार्बोनेट and the acid never combine with what? Salt, its own salt. Acid can acid combine with its salt? No. Can acid combine with its own salt? No. बुझने को तो फर्स्ट मार्क होता है एसिड रिएक्ट विथ व्हाट कोन बेस द कॉमन बेसेस आर व्हाट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट कार्बोनेट इन टाइट्रेशन
ओके अच्छा बर्तमान पे देखो तुम्हें कौन कहली जे तुम देखो सी डायरेक्शन कहा सहित करुच्ची ए सहित करुच्ची ना बी सहित करुच्ची ना बोथ सहित रिएक्शन होची वो थोड़ा सी रिएक्ट विथ ए और विथ बी और विथ बोथ और विथ बोथ ओके फर्स्ट केस 1 let only A or B, only A or B, only one, only A or only B, only A reacts with what? C, not both, only either A or B react with C. If you only A react with C, this means A and C become equal. A and C become what? Equal. Which one equal? Gram equivalent or what? Milli equivalent. Means milli equivalent of A or gram equivalent of A equal to what? Gram equivalent of C. Okay, if you only A react with C, you only B react with what? C. Okay, what does it mean? Gram equivalent of A must equal to what? Gram equivalent of C. Only A part react, only A part react. Very simple concept देखो. Okay, second case 2. If both react, both A and B react. If you both react, what will get? Means equivalent of gram equivalent of A. The total amount of C react with what? Total amount of C react with what? Both A and B. Total amount of C react with what? Both A and B. A and B. A and B both react with C. So total mass of C react with what? Both A and B. Means what? Gram equivalent of A plus. Very good. Gram equivalent of B must equal to gram equivalent of what? C. Because both part react. This is the concept. Okay, clear? Cannot clear? Look at here. So this is the concept. First question number 1, you write, you see. Question number 1. The mixture contains what? NaCl and NaOH. The total amount is what? Total mass is 10 grams. Each dissolved is prepared 250 ml solution. 250 ml solution. Same types question. Out of 250 ml, you have taken only what? 25. 25 volume of solution require what? How much acidity? 10 ml of how much? 0.1 NaCl. ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବତେଇଥିଲେ ହବ କି ନାହିଁ କହ କେମିତି করে ମତେ କହ 25 to 10 25 to 10 total is how much first you change this volume you have to change for 25 require volume is how much 10 for 250 volume require how much 100 you make it 100 okay then this part is over ना बुझे नहीं को 25 to 10 250 how much 250 equal to 100 are yes or no अच्छा you see whether HCl react with the NaCl or NaOH or both you can easily mark only NaOH or only NaCl or both only NaOH means NaOH base can react with what? Acid only. If you only NaOH react with the acid, let this equal to X percentage. Let this equal to X percentage. Sample mass is how much? 10 grams. Sample mass is how much? 10 grams. Whether this can convert to moles or not? Yes, sir. How 10 grams sample mass? How to convert to moles? Very good. 10 into
x by 100 by molecular mass 40. This is what? Moles. Convert to gram equivalent into n factor 1. Hydroxide 1. Yes or no? This also convert to gram equivalent, normality into volume liter. 0.1 into 0.1, 0.1 into 0.1. अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ना बुझिले नहीं कहो हवा कि नहीं कहो वेरी सिंपल देखो तो क्लियर कि नॉट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Mixture contains what? NaOH and Na2CO3. So total mass equal how much? 10 grams. Required to complete neutralize how much? You say 100 ml of how much? 0.1 in HCl. 0.1 in what? HCl. This is the question. This is the question. Achha, you say whether NaOH or Na2CO3, which one react to the acid? Hydroxide base, carbon to be base. Both react. Look how both react. We both will react. Both will react. Are yes or no? We both will react with let NaOH equal to X percentage, X gram. So this becomes how much gram? 10 minus x. 10 minus x. Are they clear or not clear? X 10 minus x. Are yes or no? So you can convert to moles. How convert to moles? X by molecular mass 40. X by molecular mass what? 40. This convert to gram equivalent into 1 plus. Gram equivalent. Mole will not equal. Mole cannot be equal. Okay. This you have to convert to 10 minus x by molecular mass 106. This is what? Moles. Moles convert to gram equivalent into n factor 2. N factor 2. Are yes or no? Very good. This equal to 0.1 into 0.1. Clear or not? न्यूमेरिकल जिते तुम सिंपली बुझी परिबो केते क्लियर जिंस के परिबो बेसी कॉम्प्लिकेशन को किछ करि परिबो. अरे क्लियर कि नॉट क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट. वेरी गुड. मतलब ये सेकंड कैटेगरी. नेक्स्ट इज बैक टाइट्रेशन. बैक टाइट्रेशन. Back titration. बुझने को like you write now 2 grams of metal is dissolved in 2 grams of metal is dissolved in 100 ml of N/2 HCl. Dissolved in what? 100 ml of what? N/2 what? HCl. N/2 HCl. The excess amount of acidity required to complete neutralize 40 ml of N/2 NaOH. 40 ml of what? N/2 what? NaOH. Calculate the equivalent mass of the metal. Calculate the equivalent mass of the metal. Equivalent what? Mass of the what? Metal. It is play back titration. किंतु तमें जदि टाइट्रेशन अनुसार तमें पछुआ करिक आसो एटा बहुत लेंथी प्रोसेस. किंतु मु तो सिंपली बुझुची माने फटाफट आंसर हम गोटे सेकेंड आंसर बारिबो. एट देखो
What is the concept? Very simple. देखो, look at here. A is the substance. A is the substance. A not required to completely neutralize, dissolves in B, excess amount of B. This one is excess. A dissolve in what? B. B amount is what? Excess amount. The excess amount of B after reaction with A. After reaction with A, this is the concept. First, you listen, you can easily understand. The excess amount of B required to complete neutralize C. A dissolves in B. Some B left after reaction of the A. The excess amount of B react to the C. A dissolves in B. After complete reaction, some B left. The excess amount of B react with what? C. What does it mean? This means the total amount of B react with what? The total amount of B react with what? Simple. A and C. Are yes or no? Total amount of B react with what? A and C. Now you got the concept. What is that? You say gram equivalent of A plus gram equivalent of C. Very good. Equal to this is the concept. Are yes or no? बुझने को पूरा क्लियर बुझ जते बुझता प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल जते कष्ट भी इजी है तुमको हला तले कोन लिखो तने ग्राम इक्वल टू व्हाट A इक्वल टू व्हाट प्लस के ग्राम इक्वल टू C इक्वल टू कोन ग्राम इक्वल टू व्हाट कोन B either take gram equivalent or take what milliequivalent. Either take gram equivalent or take what milliequivalent. What you can take, which you may take, anyone you can take. अरे बुझिला ना बुझने को तने कि डिफरेंस ऑफ दिस ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस आ डिफरेंस का वास्ते तो कब इक्वल हबो आ ये सुनो आ डिफरेंस टा आस्ते कब इक्वल हबो ହେଲା देखो पहले आको तमे माइंड कैलकुलेशन करे पहले बेटर टू कन्वर्ट टू मिली इक्विवेलेंट मिली हाउ टू कन्वर्ट मिली नॉर्मलिटी वॉल्यूम ml तो माइंड कैलकुलेशन हबो बुझने को केमिति अच्छा आको तो मिली करले केमि हबो हाउ टू कन्वर्ट मिली ग्राम कन्वर्ट मिली अरे ग्राम कन्वर्ट मिलीग्राम तले कहबो 2 by E into 1000 कहीं की ग्राम कन्वर्ट मिलीग्राम अरे ग्राम कन्वर्ट टू मिलीग्राम्स अच्छा मु को कहछि आर मिली इक्विवेलेंट आ कोन हबो आ डिफरेंस तो कहबो इक्वल हबो आर मिली इक्विवेलेंट कहबो आ डिफरेंस तो कहबो इक्वल हबो तले कैलकुलेशन को माइंड के हबो ओनली दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस पर पैटर्न कैलकुलेशन देखो एटा केते हबो अरे कोन 50 मिली लिटर क्वालिटी के माने कैलकुलेशन लेंथी हबो कि एमएल देखो एटा कोन 15 हाफ केते ए 100 हाफ केते 50 ये 50 ये केतला 20 पैटर्न हबो ये 50 ये 20 डिफरेंस केते 30 इक्वल टू 30 कॉन्सेप्ट बुझलो कैलकुलेशन भी इजी होला अरे बुझलो को कैलकुलेशन केंद इजी हबो ओनली दिस इन माइंड रे कैलकुलेशन करि परिबो अरे माइंड रे कैलकुलेशन करि परिबो एटा मल्टीप्लाई कर केते बडा पूरा माइंड रे परिबो केते बडा को दिस इज व्हाट केते कैलकुलेशन इन माइंड रे सेवा सिकिया पड़ो तुम बुझने को एटा केते बडा दिस इक्वल व्हाट 50 minus 30 minus of 20 equal to 30 ये वेरी संग difference of this gram equivalent or milli equivalent equal to this milli equivalent. Difference of gram equivalent equal to what? This gram equivalent. Are clear or not clear? ना तो थे बुझिलानी को बुझिलानी very simple. Hello शक्ति ना डाउट होला मुझे गोटे मेंटल गोटे क्वेश्चन डाकुच देख डाकुच लिख
এইভাবে কোশ্চেন एक्चुअली आगु पीएमटी पचार पे आजिकल पूरा इजी कर तुमको पचारूनी किंतु एटा एक्चुअली এই টাইপের কোশ্চেন আগে তো পচারতলা এই 2-3 বর্ষ পূর্বে পচারতলা 0.8 grams of ammonium sulfate whatever question may be no problem 0.8 grams of ammonium sulfate এটা question number H11 was boiled with 100 ml of 0.2 n 100 ml of 0.2 n NaOH 100 ml of 0.2 n what NaOH till all the ammonia gas evolved all the what ammonia gas what evolved पीएमटी पचार द रिमेनिंग सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 250 ml डाइल्यूशन करागला द रिमेनिंग सॉल्यूशन डाइल्यूटेड व्हाट 250 ml 25 ml of this solution मुझे रखो 25 ml of this solution required to complete neutralize 5 ml of 0.2 n H2SO4 0.2 n H2SO4 0.2 n what H2SO4 calculate the percentage purity of ammonium sulfate in the sample percentage purity of ammonium sulfate in the sample 5 ml of 0.2 n what H2SO4 calculate what percentage purity of what कोने के लिए ammonium sulfate এটা in the what in the sample देखो बोले এটা मु माइंडर में आंसर कर देबी हबे तमे करि परन को तमे करि परन को ए क्वेश्चन तो मु लिखि दे देखो 25 to record what अरे 25 to 5 250 की you change first this volume change for total volume 25 to 5 250 how much अरे yes or no 25 to 5 250 how much 50 ml this is 50 ml okay let this percentage होची x percentage this is x percentage मु कौन कहूँ कॉन्सेप्ट मु कौन कहूँ तमें कहून डिफरेंस ऑफ दिस मिल इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस मिल इक्विवेलेंट अरे यस और नो कॉन्सेप्ट बुझले सिना तमें तो फटाफट क्वेश्चन तो पढ़ टाइम पलि दब बुझुन को माइंड माइंड केन करिवो डिफरेंस ऑफ दिस मिल इक्विवेलेंट इक्वल व्हाट दिस मिल इक्विवेलेंट फर्स्ट कन्वर्ट टू मोल्स मोल अब कि नहीं कहो मोल के कहो देखो ना 0.8 into x by 100 why it's a molecular mass it is 18 are yes or no 18 into 2 36 are yes or no plus 96 are yes or no this is what moles convert to gram equivalent into 2 plus are yes or no gram equivalent convert to milli how to convert to milli into 1000 equal to difference of this हवा नहीं कहो कितना पड़े कहो this is 20 minus 10 are yes or no बोले लगी इक्वल टू 10 किस समय लगेगा तुम ए एनालिसिस गुड़ाक तुम बुक रु देखियो तो एनालिसिस कर देखियो
तुम तो पागल हो तथा हेबनी मैंने मिनिमम गोटे पेज कर तो एनालिसिस बही देखिए सॉल्व 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 कर से बही तो गोटे पेज कर तुम दिस द कॉन्सेप्ट वन लाइन गोटे लाइन रे शेष अरे हम कि नहीं कह ना बुझिलानी कह एनी डाउट क्वेश्चन करें कह व्हाट एवर क्वेश्चन मे बी एनी डाउट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज लास्ट कॉन्सेप्ट इज हम ना नहीं कथरा कौटा ना बतेबी कह ये कॉन्सेप्ट देवी क्यों हम कि नहीं कह देख इंडिकेटर बेस्ड टाइट्रेशन बेस्ड ऑन इंडिकेटर indicator means what which indicates what end point of the reaction means complete neutralization point complete what neutralization point by changing its color okay for acid based titration you have to use two types of indicator. For acid based titration what you have to use what two types of indicator. One is methyl orange, other is phenolphthalein. Methyl orange, phenolphthalein. Okay, actually this one is a weak base and this one is a weak acid whose ionization is very small. Ionization is what? Very small. If this will ionize produces what? Me plus OH minus. If this ionizes produce what? OH minus, pH minus and H plus. Actually look at here, this and this one has a different colors. This one has what color? Different color. This one is yellow. This color is pink. Yellow and pink. This color is what? Yellow. This one is what? Pink. This color is colorless. This one is what? Colorless watercolor. And this one is pink. This one is pink color. Look at it. First listen the concept. Okay. Acha. If we get excess amount of MEOH, the color become what? Yellow. Less amount. If this one is excess, pink. This one excess, colorless. This one excess, pink. This is the concept. Okay. Are yes or no? Perhaps you know Lee-Chatterley's principle. जानते ना जानना Lee-Chatterley's principle टा कौन जानते ना जानना सुनो कौन सुनो मतलब पहले कलो if you say if this amount will excess weights minus amount will excess if this part become excess the reaction will proceed which direction backward reaction become what backward the color become what color become yellow are yes or no. So in the basic medium, the color become what? Yellow. If this amount will reduce, If you add some H plus, reaction will proceed forward. The color become what? Pink. Color become what? Pink. This means in a basic medium, the color become what? Yellow. In acid medium, the color become what? Pink. Color become pink. Clear? Not clear? If H plus amount become more, H plus what? Amount become more. Backward, colorless. H plus amount become less. What will get? Pink. Pink means pink. In which medium? H plus amount will increase. Colorless. H plus amount will decrease. The color become what? Pink. Very simple concept.
क्लियर कि नॉट क्लियर बुझिले ना बुझिलेनी कह ना बुझिलेनी कह बेसिक मीडियम दिस कलर इज येलो एटा बेसिक मीडियम एटा व्हाट एसिड मीडियम एसिड रे कह एटा एसिड मीडियम एटा कोन बेस मीडियम अरे यस और नो ना बुझिलेनी कह क्लियर कि नॉट क्लियर बुझिले ना बुझिलेनी कह एट देखो perhaps you have done titration परंतु तो titration करन नथियो जे कहीं तो कोविड जो बंद हितला प्रैक्टिकली करन नथियो देखिछन देखिनो एटा एटा कोनटा पिपेटा ना पिपेट ना एटा पिपेटा कारण प्रैक्टिकल तो ना एटा कोन टेस्ट बुटा कोनिकल फ्लक्स ना टेस्ट बुटा देखो this one is what this one is burette okay in burette what will take in burette what will take acid or base that is confusion you take indicator here this in burette you have to take what acid burette you have to take what acid because base you take what base let base is NaOH any base you can take any base you can what take any base you can take you will first add methyl orange to this MEOH to this one is strong base this one what strong base the OH bonds become excess with the color become what this color become what yellow this color become yellow are yes or no acha if you add H plus and drop by drop H plus and drop by drop tale first here is OH minus here also OH minus H plus will combine with this or this amount is very less this first combine is what this amount this OH minus are yes or no when this OH will be totally consumed only finished you have added what H plus N you have added what H plus N when this OH minus will be finished this common is what this OH minus जतले ये पर सरी जीवो कास तो कमेंट करिवो आसो तो अरे ये सरी गला पर कास तो कमेंट कर आसो तो बुझले को जो सरी गला तले को हबो डायरेक्शन कोड जीवो फॉरवर्ड जीवो the color become what pink color become what does it means when a yellow color is converted to pink color yellow color is converted what pink color at this point the total quantity of a base this quantity of a base is completely consumed तो माइंड करो जो समय कलर टा चेंज होउछ मु कहै कथा जो समय कलर टा चेंज होउछ चेंज हला कहू छी कलर चेंज हला कहू छी अर टोटल अमाउंट कहू छी कंप्लीटली कंज्यूम होउछ कंप्लीट कंज्यूम होउछ either take hydroxide base or take carbonate base or take what any base type of base if you add some H plus बुझने को नु कम H plus add करबा common with carbonate common with H plus to produce what H2 carbonic acid कोन H2CO3 weak base से H plus प्रोवाइड करबनी H plus प्रोवाइड कर सब कंज्यूम हो जिवो बुझियो छ को ये कंप्लीट कंज्यूम कला परे का हबो द येलो कलर बिकम व्हाट व्हिच कलर पिंक कलर तमन द बेस मे बी हाइड्रोक्साइड मे बी कार्बोनेट मे बी बाइकार्बोनेट कलर चेंज मींस टोटली कंज्यूम टोटली पार्ट कंज्यूम अरे यस और नो बुझिलो ना बुझिलोनी को जो समय येलो कलर ता पिंक की कन्वर्ट हबो से समय कहत हबो पिंक कलर कन्वर्ट को समय हम तो को समय हम तू H plus आयन ऐड करूछु तू जो टाइप रो बेस तो यूज करी जो टाइप रो बेस तो यूज करी सब को हबो आगे H plus के नबो ये नबो ये नबो आगे ये नबो ये पूरा कंप्लीट कंज्यूम हला पर को हबो से नबो ये OH नबो नेला पर को हबो आ मोड कमी जीवो एसिड रे OH कमिले को हबो ए OH कमिले को कलर को हबो येलोटा पिंक हबो आ यस और नो तो जो समय येलोटा पिंक होची माने कोन ये फर्स्ट रिएक्ट कला
बुझे को रिएक्शन करे का पूर्व रिएक्शन करे फास्ट रिएक्शन करिवो फास्ट के रिएक्शन करिवो एटा ये कंप्लीट कंज्यूम हला पर कब येलोटा पिंक की कब कन्वर्ट हे जिवो अरे बुझले ना बुझने को ना तथे बुझले नहीं को क्लियर कि नॉट क्लियर बुझले ना बुझने को फास्ट कॉन्सेप्ट देखो मु गोटे कोन कहली फास्ट को इफ यू यूज व्हाट मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मु जो वर्ड टा कहूँ बारंबार को सुनो if you use methyl orange what indicator when color of indicator will change what will happen total amount of all types of bases are completely consumed what consumed with the acid clear not clear बुझले ना बुझने को okay next point if will take this is base if will take phenolphthalein indicator phenolphthalein PHH indicator. Okay, this ion is to produce what? OH minus and what? OH minus and what? H plus. If you first you take NaOH, first you take what? NaOH. If you add acid H plus, first you combine with what? Whether H plus and excess or combine with OH minus? Combine with what? OH minus. Combine with what? OH minus. Are yes or no? Yes, sir. We combine with OH minus after completion of what? After the completion of a reaction, when OH minus will totally consumed, then H plus will become excess. If H plus will become excess, the pink color become what? The pink color become colorless. Pink color become what? Colorless. So if hydroxide base hochi, after the complete consume of what? OH minus, the pink color become what? Colorless. तो जो समय कलर कलरलेस होची से समय को OH minus को टोटल कंज्यूम नॉट कंज्यूम टोटल पार्ट कंज्यूम टोटल कंज्यूम कला पर कलरटा चेंज हम टोटल कंज्यूम कला पर कलरटा कब चेंज हम अरे बुझले बुझने को क्लियर कि नॉट क्लियर टमेटा के लास्ट नोट डाकी देबी हला वर्तमान मत प्ले कलो एटा इंडिकेटर कोन छी पीएचएच मु यूज करबी कार्बोनेट यूज करबी कोन कार्बोनेट बेस अच्छा तू H+ ऐड करू H+ ऐड करसे कोड आडाबो H+ एक्सेस माने कंज्यूम करिवो ये कंज्यूम करिवो ये को कंज्यूम बोले कौन को बाइकार्बोनेट बाई फर्स्ट बाइकार्बोनेट हो अप टू बाइकार्बोनेट को कंज्यूम करिवो अप टू बाइकार्बोनेट को कंज्यूम करिवो हला बिला देखो बाइकार्बोनेट जो वीक बेस एसिड टा बाइकार्बोनेट को वीक एसिड निजे गोटे से एसिड निजे गोटे कब एसिड जो कार्बोनेट पर टोटली फिनिश हो तुम सॉल्यूशन कौन अच्छी ओनली व्हाट बाइकार्बोनेट ये पूरा फिनिश हो तुम कौन पाइछ ओनली व्हाट बाइकार्बोनेट ये जो बाइकार्बोनेट कौन एत एक्सप्रेशन भी अच्छी ये अल्प टिके भी एक्सप्रेशन एक्सीड कले एक्सप्रेशन टिके जस्ट आयनाइज कले भी अल्प टिके भी आयनाइज कले अल्प टिके भी आयनाइज कले मन के 100 टा अछि 0.1 में जो आयनाइज कर गला एक्सप्रेशन कौन हो गला एक्सेस गला टिके ओवर हो गला काई कि आमे कहै जे ये कंज्यूमर फॉर्मेशन जदि 100% फॉर्मेशन हबो किछि भी आयनाइज करबोनी ताहले कहबो सेमत रहइबो किंतु ये जेहेतु एसिड टा 0.1% जदि आयनाइज भी कला बुझन को ताले कहबो टिके एक्सेस गला एक्सेस हला माने कहबो पिंक कलर बिकम व्हाट कलरलेस पिंक कलर बिकम व्हाट कलरलेस हला तापरे ये तो पिंक कलरलेस हे तो ना तापर तुम एक्सपोज जते ऐड करले भी आ इंडिकेटर कि देखा जिवो इंडिकेटर कि सब रु गयो कैसे करबोनी ऑलरेडी कहछि पिंक टा कलरलेस है ताले जो पिंक टा कलरलेस हला से जे को जे हला अप टू को जे हला अप टू कार्बोनेट कन्वर्ट व्हाट बाइकार्बोनेट तनो हाफ रिएक्शन में कहछि पिंक बिकम कलरलेस और हाफ कंज्यूम में कहछि तो पिंक बिकम व्हाट कलरलेस पिंक बिकम कलरलेस अरे बुझले ना बुझने को द पिंक बिकम व्हाट कलरलेस क्लियर कि नॉट क्लियर क्लियर नॉट क्लियर अच्छा मतलब प्ले करो तो बाइकार्बोनेट तुम डायरेक्टली यूज करते कोन हेबो ए बाइकार्बोनेट फेनोमेनल इंडिकेटर डायरेक्टली पकेबो तले कोन हेबो तुम एसिड ड्रॉप पके पूर्वरु माने पके नथिबो कप द पिंक बिकम व्हाट द पिंक बिकम कलरलेस if pink become colorless that indicates what no reaction with acidity ना याको ऐड करे कलरलेस है जी ना एथुर निजे निजे कलरलेस कर दैछि ये निजे कलरलेस कर दैछि अरे बुझलो बुझने को क्लियर ना नॉट क्लियर
क्लियर नॉट क्लियर ताले कांसेप्ट कौन कहली कह व्हेन कलर बिकम व्हाट कलरलेस व्हेन कलर विल चेंज if we take hydroxide base after complete reaction the color become colorless बुझने को कलर बिकम व्हाट कलरलेस को बेस पे हाइड्रोक्साइड पे द कार्बोनेट यूज करबो हाफ रिएक्शन पर कहबो कलर बिकम व्हाट पिंक बिकम कलरलेस बुझने को बाइकार्बोनेट यूज करबो for the starting of the reaction of what pink become colorless zero part of acid consume अरे बुझलो बुझने को एटा को इंडिकेटर पे फेनोमेथेरेपी मिथाइल ऑरेंज चेंज होतले कि अरे मिथाइल ऑरेंज चेंज होतले कि एटा प्रॉब्लम कोड होची फेनोमेथेरेट अरे प्रॉब्लम कोड होची दिस इज द कांसेप्ट हला मु आउ थरे तार ब्रीफ टा को दोची टू इंडिकेटर वन इज मिथाइल ऑरेंज अदर इज व्हाट फेनोमेथेरेट मोर फर्स्ट तुम फोकस करबो when color will change color जो चेंज होची कोन देखो एटा को देखो कलर चेंज होला बेले देखो कोन होची जो सर कलर चेंज होची देखो से समय कोन होची जदि मिथाइल ऑरेंज यूज करछो ताले कोन हबो कोन हितबो कलो तमे जो भी टाइप रो बेस यूज करबो जो टाइप रो बेस यूज करबो हला सब कंप्लीट रिएक्शन हला पर्यंत को एसिड की कंज्यूम करबो एसिड को एसिड पार्ट को कंज्यूम करबो ए बोरेट एसिड कंज्यूम करबो अरे बोरेट एसिड को कंज्यूम करबो सब एसिड कंज्यूम करबो हला कंज्यूम हला पर जे को कलर टा चेंज हबो त कोद पे मिथाइल ऑरेंज अरे बुझने को जदि फेनोमेथेरेट इंडिकेटर यूज करछो फेनोमेथेरेट इंडिकेटर यूज करछो बेस्ट हाइड्रोक्साइड अछि तले कहबो कंप्लीट रिएक्शन हला पर जे कि कहबो कलरलेस हबो कलर चेंज हबो संपूर्ण कोन यूज करबो एसिड बोरेट एसिड यूज करबो अरे यस और नो ना तथे कन्सेप्ट बुझेले जदि कार्बोनेट अछि हाफ रिएक्शन पर कहबो कलर टा चेंज हबो बाइकार्बोनेट अछि स्टार्टिंग रु कहबो एसिड कंज्यूम करते देबो जीरो एसिड पार्ट कंज्यूम करते जीरो अच्छा ताले कंक्लूजन कोन हाइड्रोक्साइड बेस तले एसिड पार्ट टोटली कंज्यूम होल पार्ट कंज्यूम बुझने को पूरा ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम हला यदि कार्बोनेट अछि हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंज्यूम बुझने को बाइकार्बोनेट अछि 0 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल कंज्यूम अरे यस और नो बर्तमान यू नोट करो देखो if we use देखो using first using methyl orange indicator methyl orange what indicator देखो 8 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट माने कलर चेंजिंग पॉइंट 8 माने क्लिक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट माने कलर चेंजिंग पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और कलर चेंजिंग पॉइंट हेलो देखो ऑल टाइप्स ऑफ बेसेस लाइक हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट all types of bases completely react with what acid added सब एसिड रे भाव रिएक्शन कर दिए all types of bases what completely what react with what acid added if we use phenolphthalein indicator what indicator hello at color changing point what will happen first point if it is OH minus if it is what OH minus total amount react with what acid total amount react with the acid would react with what acid सब एसिड से रिएक्शन करिवो OH minus अछि हाइड्रोक्साइड बेस अछि टोटल अमाउंट व्हाट रिएक्ट विथ कोन एसिड फॉर कार्बोनेट कोन हबो हाफ
amount of this react to this CD. Half amount of this react to this CD. Half amount of this और अधा amount reaction करिवो. Half amount of this react to the acid. अरे बुझु जो बुझने को. If bicarbonate base 2 minus sorry. Bicarbonate base what? Zero amount. Zero amount of what? This. Zero amount of this what? React to the अरे कौन react to the what? Acid. This is the concept. This is the concept. Clear or not clear? ହେଲା ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ବେସ୍ କରିକି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଦିଟା କରିଦେଲେ ତ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଲେଖ क्वेश्चन ଲେଖ a solution contains NaOH and Na2CO3 NaOH and Na2CO3 NaOH and Na2CO3 मिक्सचर कौन है NaOH ଅଛି and Na2 what CO3 ଅଛି 25 ml of this solution 25 ml of this solution 25 ml of this solution required to complete neutralize 30 ml of N/2 HCl 30 ml of N/2 HCl 30 ml of N/2 what HCl by using phenolphthalein indicator phenolphthalein what indicator phenolphthalein indicator okay full stop if methyl origin indicator is added to this methyl origin indicator is added to this so the methyl origin को add करा जीवो the solution further require 10 ml of N/2 HCl 10 ml of N/2 HCl 10 ml of what N/2 what HCl calculate the molar ratio of what molar ratio of NaOH and Na2CO3 NaOH and Na2CO3 molar ratio पचारिଛି अच्छा पहले कहलो मन करो ये x मोल अच्छे y मोल अच्छे रेशियो केते हबो x is to y अच्छा मिली मोल ले से भी हबो रेशियो केते हो से x is to y x is to y अरे yes or no अच्छा बता मते पहले कहलो मुद्रा एटा बता फास्ट देखो मु जदी फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करबी मन को ये होची x मिलीमोल से होची y मिलीमोल से कथनी मिली एटा इजी हो टिके हला अच्छा पहले कहलो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करिवो एटा कहै दबो जे कलर चेंज होची ये कहै दबो पूरा x पर रिएक्शन कर दबो x एटा करो मोल्स एटा करे मोल्स मिलीमोल्स मोल्स कोन अच्छा कन्वर्ट व्हाट मिली इक्विवेलेंट हाउ टू कन्वर्ट मिली इक्विवेलेंट इनटू n factor or into you have to convert milli equivalent not moles you have to convert what milli equivalent into 1 plus अच्छा फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करे ये कितने रेशो कर दबो टोटल ना हाफ ना जीरो हाफ माने केते y/2 कोन मोल्स एटा कोन मोल्स कन्वर्ट टू मिली इक्विवेलेंट हाउ टू कन्वर्ट into 2 is equal to milli कितना हो Are yes or no? Then this means x plus y equal to 15. First. ना बुझे निको. Are yes or no? This part totally consume. This half consume. अरे बुझे निको. ना y/2. अरे clear or not clear? पूरा कॉन्सेप्ट बुझो. होगा कि नहीं को? अच्छा ये after this reaction if methyl is added to this. Methyl is added to this. The solution further करके दे 10 ml for 10/2 HCl. आउ बोली फेनोल्फथालीन पर आ बळका की अछि ये केते बळका अछि 0 ये केते बळका अछि हाफ जाई हाफ थिबो
और हाफ चेंज आउ हाफ थी यस नो मिथल इंडिकेटर जो added to this रेस्ट पार्ट रिएक्शन करिवो रेस्ट पार्ट केते अछि y/2 into 2 y/2 into 2 कहीं गली तर n बेटर 2 और यस नो बुझले नि करे n बेटर 2 इक्वल के दबो पार्ट बिट से करो 5 तो y इक्वल 5 x ला 10 बेटर बिट सब तो रेशियो के तला x is to y किधर 10:5 और 2:1 किस वाला गेला पूरा कॉन्सेप्ट बुझो एनी डाउट क्लियर कि नॉट क्लियर बुझला तो ना डाउट रहा अदर कोई भी देखो आउट क्वेश्चन लिखो द सॉल्यूशन कंटेन्स ये लिखो हे मिस लिखो the solution contains NaOH and Na2CO3 NaOH और Na2CO3 the solution contains NaOH and Na2CO3 NaOH and Na2 what CO3 25 ml of this solution 25 ml of this solution required to complete neutralize 30 ml of N/2 HCl 30 ml of N/2 what HCl by using phenolphthalein indicator 30 ml of N/2 कौन HCl by using what phenolphthalein what indicator full stop in separate titration out all titration separate titration सेतर ऐड कर अलग ऐड कर सेपरेट करने के लिए titration if methyl orange indicator if use methyl orange indicator what indicator same volume of acid same volume of solution same volume of solution require same volume of solution require 40 ml of N/2 HCl 40 ml of N/2 कौन HCl calculate the molar ratio of these two এটা তুমি নিজে করিব আকু ধর x আকু ধর y मोल्स मिलीमोल्स करियो हो कि नहीं कहो प्रथम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज कलो पहले कितना होगा ये कितना होगा x into 1 plus फेनोल्फथालीन कहाँ होगा होगा कि नहीं कहो এটা কিন্তু y/2 into 2 into 2 पर n factor होची 2 होगा कि नहीं कहो equal to 15 तो x plus y is 15 क्लियर कि नॉट क्लियर अरे क्लियर कि नॉट क्लियर अच्छा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करें ये x plus what 2y और y into 2 कहेंगे n factor 2 अरे n factor 2 इक्वल कितना होगा 20 तुम x plus y 15 x plus 2y होची 20 अब कि नहीं तरको ना बुझले नहीं को क्लियर है नॉट क्लियर जहाँ वाला कौन क्षेत्र कौन सी ना बुझले नहीं को क्लियर कि नॉट क्लियर अच्छा पहले कहलो मु जदी आकु यूज करथांती एटा NaOH आउट नेबी सॉरी Na2CO3 नेबी आ गोटे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करथांती बाइकार्बोनेट यूज करथांती तले कहता एटा y तले किंदा हबो कि नहीं एटा केम दो मते पहले कहलो मु क्वेश्चन देखो बुझी दउची if we use methyl orange indicator तले कौन हबो x plus 2x plus y 2x plus y x into 2 plus y into कितने 1 अरे yes or no y into कितने 1 एटा कौन यूज कले
मिथाइल आयोनिक अच्छा फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करले कोन हो एटा x/2 * 2 x/2 * 2 एटा केते y * y आसोगी 0 एटा 0 हो जाउ कोन 0 कहीं जीवो अरे बुझलो निको सो दिस द कांसेप्ट 0 दिस इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू एसिड कोन एसिड रो अमाउंट कोन हवल ना बुझलो ना बुझो निको क्लियर ना नॉट क्लियर आतर कहबी कि मिथाइल आयोनिक इंडिकेटर यूज करले का हबो ये केते x कोन मिलीमोल्स मोल्स हो जति कि ओदि मिली इक्वल यूज करू कि 2 प्रूव करे दरकार नहीं कि बेटा n पेटर को मल्टीप्लाई कर नले कोला बनी मोल्स यहां पे कन्वर्ट व्हाट मिली सॉरी माने मिलीमोल्स कन्वर्ट टू मिली इक्विवेलेंट अदर गेट रॉन्ग आंसर मिलीमोल्स विल नेवर इक्वल मिली इक्वल टू इक्वल इट इज माइंड रखो अरे बुझले ना बुझने तथा क्लियर नॉट क्लियर अरे बुझलो ना तथा बुझले निको हला ए कांसेप्ट भल से बुझो एनी डाउट हला यदि मिथाइल आयोनिक इंडिकेटर यूज कलो ताले सब x डेट करिवो वो होल रिएक्शन करिवो हला फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज कले हाइड्रोक्साइड अछि टोटल कार्बोनेट हाफ बाइकार्बोनेट 0 क्लियर कि नॉट क्लियर हला परहैप्स ये जो पार्ट ता तमरो क्लियर हो गेला मते लागु ना ना डाउट रहला इंडिकेटर को बेस करके ए कांसेप्ट तो इजी नो बुझने को दिस कांसेप्ट नॉट इजी किंतु तुम जते इजीली बुझिबो सेते इजी लागियो हला तब बतना इटा प्रॉब्लम आराम से करि परियो ना होबनी को खबर नहीं तो वॉल्यूमेट्री पार्ट इज ओवर वॉल्यूमेट्री इज ओवर दिस पार्ट इज ओवर